एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। मैं हूं महवाश अजाज। हमेशा की तरह आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और पीछे मेरा कमरा है, नीचे बच्चों की आवाज़ें भी आ रही हैं, तो ये फिर भी हम अपना सफ़र जारी रख रहे हैं क्योंकि इतने अरसे से आप लोग मेरे साथ हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रिव्यूज़, शेयरिंग माई रिव्यूज़ एंड फॉलोइंग मी ऑन अदर सोशल मीडिया एज वेल, जहाँ पे मैं अपने ख्यालात और तासुरात का जो है वो इजहार करती रहती हूँ। हमेशा की तरह हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामों के ऊपर, और इस दफ़ा मैंने सोचा है कि क्योंकि हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे ड्रामे जमा हो गए, तो क्यों ना जल्दी से एक राउंड अप कर लें। जी, तो शुरू करते हैं फ्रॉड से। फ्रॉड लिखा है जंजबील आसन ने और उसको डायरेक्ट किया है साकिब खान ने। ARY से एरो है, स्टारिंग सबा कमर, एहसन खान एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ अदर अमेजिंग कास्ट सच एज अदनान समद एंड महमूद असलम साहब। सो बहुत सारी स्टार कास्ट है, ज़बरदस्त सी इंट्रीगिंग प्लॉट है। कंपेयर टू अदर शोज जो आजकल टीवी पे चल रहे हैं, इसका पेस थोड़ा स्लो है लेकिन फिर भी ग्रिपिंग है, क्योंकि फिर भी इसकी अपनी पेस है। सो उसकी अपनी पेस के अंदर, उसकी यूनिक पेस के अंदर आप जो है वो थोड़ी देर बाद, because the performances are so good and the writing is, it's kind of bringing a lot of other strange elements together and you kind of wonder कि यार how will they eventually come together। तो फिर भी आप इसके अंदर थोड़े से महजूज होते हैं, आप थोड़े से इसके अंदर आप इन्हमाक से जाके इसको देखते हैं, किरदारों को परखते हैं। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट जो थीम जिसके ऊपर बात हो रही है वो मटीरियलिज्म है फ्रॉड के अंदर, कि मटीरियलिज्म कैसे लोगों को गलत डिसीजंस लेने पे मजबूर करता है। सोसाइटल प्रेशर जो है वो गलत डिसीजंस लेने पे मजबूर करता है। समटाइम्स इट ब्लाइंड्स योर एबिलिटी टू सी थिंग्स विच आर जस्ट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब रेड फ्लैग्स आपके सामने होते हैं लेकिन आप नहीं देख पाते। पैरेलल स्टोरी लाइन जो है वो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। मिकाल जुल्फ़िकार की स्टोरी लाइन जो है वो कैसे हजरत हैं जिनकी बेगम उनको छोड़ के चली गई हैं अपनी बच्ची समेत, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी जो सौतेली माँ और बहन है वो उनको पागल बना रही हैं और उनके रिश्ते के अंदर भी दरार पैदा कर रही हैं। सो वी डोंट नो हाउ ऑल ऑफ दिस इज गोना टाई इन टू सबा कमर स्टोरी लाइन, जो कि एक ऐसी खातून है जो कि obviously who has been defrauded, and I think that Saba is fantastic. She's so fabulous, and a lot of people who think कि यार इनकी एज ज़्यादा है इसके लिए, हाँ ठीक है, sure, that's a valid criticism, but what I feel is कि if somebody is good enough, there are men who are good enough who are doing roles for which they are like way younger, way older, and so can women. So I think it's fine as long as the person can act well, so why not। देन वी मूव ऑन टू चराहा। वही मटीरियलिज्म है वाला एलिमेंट, और मदीहा इमाम प्ले कर रही है एक ऐसी अनविटिंग सी लड़की जिसको बहुत ज़्यादा शौक है चीज़ों का, मटेरियल्स का। वो अपनी स्कूल की फ्रेंड्स से, कॉलेज की फ्रेंड्स से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाती हैं। और मिकाल जुल्फ़िकार वंस अगेन दो बहुत ही डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहे हैं। फ्रॉड में वो अलग रोल प्ले कर रहे हैं और चराहा में ही इज़ आउट एंड आउट विलन। एंड रिसेंट एपिसोड्स हैव लेफ्ट मी काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड कि ये विलन है या क्या सीन है इनका। इनके हार्ट ऑफ गोल्ड भी है लेकिन at the end of it you're a criminal, you're kidnapping girls bro, so what is happening there? So I'm just waiting for certain things to be clearer to me. I want to see कि villainy को ये क्या justify करेंगे, क्या लिखेंगे। It's written by Edison Idris, जो कि I'm sure इस तरह की कोई चीज़ नहीं करेंगे। फिर वहम जो है वो भी एक टिपिकल फैमिली ड्रामा है, स्टारिंग सवेरा नदीम, बाबर अली, किंजा हाशमी एंड ज़ावियार नुमान एजाज। ज़ावियार नुमान एजाज हैज लैंडेड येट अनदर वेरी meaty role, and I love Numan Ajaz. Like, I think he's phenomenal. I think he's one of the greatest actors we have, but it doesn't mean that his son is a great actor, and I think that he just didn't deserve this role. Then we have Badshah Begum, which leaves you a bit in a quandary ke what exactly has been changing people's motivation so far. They kind of flip whenever they, I think, feel मतलब कोई opportunity आती है तो flip करते हैं, लेकिन जहाँ आ रहा है कि exactly क्या opportunity है जिसकी वजह से वो flip कर गई हैं, and she's become this total Badshah Begum, maybe because she wants, at one point she wanted to protect people and then she wanted to also just be in this role because she felt कि यार ये कर लूँ, ये ज़्यादा आसान है बजाय ये कि मैं जा के लोगों को protect करूँ, which is just not working. So I don't really know what's going on there, but it's still a very good show because there is a lot of important theme there, because feudalism की जो हम ड्रामे देखते हैं कि जी वो एक नॉटी सा और एक बदतमीज सा और एक करप्ट सा फ्यूडल होता है, लेकिन वो क्यों ऐसा होता है और क्या सिस्टम्स ऐसे प्लेस में होते हैं जिसकी वजह से वो इस तरह बिहेव कर रहा है। That is something that Badshah Begum delves into really well, and it sort of I don't think it's for everyone. I think Khazir Idris has a specific style, although I think अगर वो थोड़े से पेस को बढ़ाते in terms of shots and story, क्योंकि शुरू से ही इतनी तेज से स्टोरी चल रही थी तो बीच में थोड़ी सी शायद फंस गई है, बट लेट्स सी, आई एम श्योर आगे जाके वो काफ़ी अच्छा होगा।
Then we have Sangema, which is 20 plus episodes पे चला गया है. आतिफ असलम is still finally उनके बाल हिल गए हैं अपनी जगह से, which is great because as Hilman that madness factor has to be showcased through the rest of his surroundings as well and his own persona. उनके कपड़े, उनके जूते, हाथ, पाँव, मुंह, वो सब wasn't really fitting into Hilman, but I think that's happening now. And again, it's got fantastic dialogue, such great dialogue. Hilman के dialogues are beautiful, they're lyrical, but वो फिर भी उनका वो impact इसलिए नहीं आता because Atif has one tone for delivering each dialogue. वो मेरे घर में आए हैं, खुदा की कुदरत है, हम कभी उनको कभी हम अपने घर को देखते हैं. So he has delivered all of the lyrical dialogues in the same way, and now there's a bit of a variation for sure because इतना बड़ा उनके ऊपर bombshell गिरा. I won't spoil the show for you, but I think that that bombshell came a little bit too late. I think it has lost some of its audience, but still the dialogue is amazing. And if you want to get more insight into the lives and times of this, the smaller towns of KPK, and obviously people who are from KPK can define it better कि ये कितना authentic है. But I think I enjoy it. I enjoy it because of the fantastic performances by Mahwash Ajaz and Sania Saeed, of course, and Umair Rana. Then we have Kaisi Teri Khudgarzi, which is like, I think, Danish Taimur's show. I think we should just call it Danish Taimur's show because he is just eating up every scene that he's in. He's fabulous. He's so good as an actor. Again, he is not the hero. He is definitely not a hero. And I'm glad that Dure Fishan ने social media पे ये clarify भी किया है. जो उनकी फैन गर्ल्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि बेटा प्लीज़ वो हीरो नहीं है, खुदा के वास्ते ऐसी बातें करना बंद कर दो कि अल्लाह करे वो हमें किडनैप कर ले. अल्लाह ना करे कि कोई भी बच्ची किडनैप हो और किसी भी खातून के साथ इस तरह का कोई पागल आदमी उसके पीछे पड़ जाए. बिल्कुल पागल ख़ानदान है, बिल्कुल पागल हीरो है. और लड़की के ख़ानदान की भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो they can't leave the city. I'm not sure. Did I miss something? Please let me know in the comments. They can't just like go away somewhere. And although I understand कि सिस्टम्स में हमारे यहाँ इतनी ख़राबी है कि लॉ एंड ऑर्डर आपको क्रिमिनल से उस तरह प्रोटेक्ट नहीं कर सकता सिस्टम हमारा जैसे करना चाहिए. देन यू हैव in passing the couple of shows which I kind of catch up on, but I'm not really into them anymore, or haven't been really watching them very closely, are Badzat, Mere Humsafar and Pehchan. One show which I have left for last, which is my favorite show, is Habs, and it's written by Alia Makhtoom. It's directed by Musaddiq Malik, and it is starring Ushna Shah and Feroze Khan with a lot of other great star cast like Saba Faisal and Irsa Ghazal, and you've got all these amazing stars there which are obviously adding all the meat to the story. But I think this is a very typical story done in a very brilliant way. It's written in a very tight way, and it's directed in a very nuanced way, and it's directed with the kind of the kind of love we have for actual characters, like real human beings, कैसे वो बात करते हैं आपस में. एक और बहुत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर बात हो रही है, दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एक्चुअली जिसके ऊपर बात हो रही है, एक क्लास डिवाइड है और एक वर्क प्लेस हरासमेंट है. क्लास डिवाइड कैसे हब्स में डिस्कस होता है वो ये है कि कैसे बहुत सारी मजबूरियां आपकी ज़िंदगी में आती हैं. वो इसलिए आती हैं क्योंकि आप एक सर्टन क्लास से बिलोंग करते हैं और आप उन मजबूरियों से जान नहीं छुड़ा सकते, इवन दो वो लगता है बड़ा ईजी कि नहीं कोई बात नहीं ऐसे हो गया, मगर ये मजबूरियां आपकी जान नहीं छोड़ती हैं. एंड देन यू हैव वर्क प्लेस हरासमेंट, जिसमें वो ख़वातीन जो कि वर्क प्लेस के ऊपर हरास होती हैं और स्लट शेम की जाती हैं या और भी तरीके से उनको डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है, वो क्यों नौकरियां छोड़ के नहीं जाती हैं? इसलिए क्योंकि उनकी फैमिली में ये पॉसिबल नहीं है कि वो एक कमाऊ पूत लड़की हो या एक कमाने वाली लड़की हो और वो भी नौकरी छोड़ दे. So the class divide, and when we talk about Me Too, when we talk about harassment, when we talk about workplace harassment, this is a very good look at how it works. I think in some ways it's kind of unrealistic because एक तरफ आपको दिखाया कि जी Basit Salman, which is played by Feroze Khan, is a great boss or is a very competent boss, but he goes around yelling and being angry at people, and he has obviously some mental health issues. I also felt like he's way too angry at his mother, like way too angry, like थोड़ा ज़्यादा हो गया बॉस, थोड़ा नीचे करते हैं आपको, तो शायद बेटर होता. लेकिन
फिर भी इसमें और बहुत सारे मेच्योर एलिमेंट्स हैं. फॉर एग्जांपल बानो का जो कैरेक्टर है वो अपने इस एक्स के साथ कैसे डील करती है. उसकी एक मोहब्बत है जो कि कामयाब नहीं हुई, लेकिन वो ज़ाहिर है शी इज़ ऑलमोस्ट सुसाइडल एंड शी इज़ वेरी वेरी अनहैप्पी, बट देन शी ऑल्सो गोज फॉर क्लोजर एंड दैट सीन इज़ रियली ब्यूटिफुल. सो आई थिंक दैट देयर आर लॉट ऑफ वेरी मेच्योर थीम्स इन इट. वेरी it's something you like watching because of it's like any good drama is like reading a really good novel, and that's what Habs is. So I think that Habs is my favorite of the lot, followed with Fraud, Sangema, Bacha Begum. There are a lot of other good shows also coming up, I'm sure, but abhi wale jo lot mein hai वो ये भी अच्छा है. प्यार दीवानगी है is also great because of the performances. गुले राना and समी खान are my favorite in that show. So I'm watching all of these. आप लोग बताइए आप लोग क्या देख रहे हैं. Do let me know in the comments. feedback दीजिएगा और कहीं मत जाइएगा. सब्सक्राइब कीजिएगा, करते रहिएगा. अपने फ्रेंड्स को भी बोलें सब्सक्राइब करें, because I am going to inshallah be with you guys more and more. I know I make that promise every few days, but this promise is सही वाला प्रॉमिस करी हूँ इस दफ़ा. एनीवे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ ग्रेट लाइफ, स्टे सेफ. अभी भी हम पैंडेमिक के बीच में ही हैं तकरीबन, इवन दो एवरीथिंग इज काइंड ऑफ नॉर्मल. इट्स द न्यू नॉर्मल. सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे एंड हैव अ गुड लाइफ. बाय.